Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. It's been a very long time since I had my episode of Unfiltered guests recorded. It has been almost 3, 4 months that I recorded something with someone else. I had a lot of options. I could have done a lot of other episodes, interviewed a lot of people, but I wanted to save this episode for this very special person because my second episode could not have, I would never do it with someone else but this guy. Ladies and gentlemen, this guy is the podfather, the voice of Pakistani mixed martial arts. Some people call him the Bruce Buffer of Pakistani MMA, but I won't call him that because he is the DNM of the Pakistani mixed martial arts scene. He is Mr. On the Mic, the life of all the concerts, and he's the energy for every single event, every single time he's on stage. Ladies and gentlemen, give it up and let's welcome Mr. Daniyal Nasir Mirza. Hey, thank you so much, my brother. That is actually the first time anyone has ever introduced me for anything. So I appreciate that. And I also appreciate the fact कि आपने कहा कि मैं इनको पाकिस्तानी ब्रूस बफर नहीं कहूंगा क्योंकि Never. मुझे समझ आती है जब लोग कहते हैं ये मुझे तो ये कॉम्प्लीमेंट है मैं बहुत खुश होता हूँ सुन के इनफैक्ट आई एम नॉट वर्दी ऑफ दैट कॉम्प्लीमेंट नॉट ही बिल्कुल करीब भी नहीं उसके Nah, bro, but you I are. hate that compliment because I love Bruce. He's my inspiration. I look up to him. But bro, I'm not Bruce Buffer, and Bruce Buffer is not me. So like that's just facts. But you have to own up to that. But thank you, Uloomi, for doing this with me. I appreciate you so much, man. You have no idea. Like honestly, it means the world to me that I'm number two on Uloomi's Unfiltered guests. And before we move on, I just want to say, aap sab jo dekh rahe hain, thank you for tuning in. But please subscribe to Uloomi Karim, one of the best fighters in Pakistan ever. Legend, now transitioning into what we need, which is more people talking about MMA from the fighter's perspective. So please subscribe to Uloomi and thank you, Uloomi, for having me. Thank you, my brother, for being a part of this. And it's been a very long time coming. I just wanted to, I wanted to start off with you, but then obviously I had Bashir Bhai here, and it was going to be a regular thing. But I was like, nah. Second episode needs to be with the Podfather. The Podfather here is here. The hunter is being hunted, and the interviewer is going to get interviewed. And this is going to be fun. This is going to be interesting. But man, first off, let's start off with what everybody wants to know. Everybody sees the on the mic. Everybody watches on the mic. Everybody loves on the mic, but they don't know the story behind what and how did on the mic start and what caused the birth of on the mic. Man, honestly, मैं 2019 में वापस आया था अमेरिका से मैं एक साल के लिए उधर पढ़ने गया था वैसे तो यहाँ लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से I graduated with a degree in economics and political science which again कोई ताल्लुक नहीं है with what I want to do or what I am doing right now but मैं जब अमेरिका से वापस आया था एक और साल था यूनी का my friend Ismail Farouk, he's a very important part of the story. He was already starting a podcast called Pressing Matters, talking about football because he's a football fanatic. And I had made up my mind when I came back, यार अच्छा I want to start something about MMA. मुझे पता नहीं था कि पाक MMA है या क्या है. मुझे बस था यार MMA is a sport जो मुझे पसंद है उसके बारे में I'm obsessed with MMA. And like a lot of people in my generation, it started with the UFC video games. मैं मतलब obviously follow karta tha MMA, Chael Sonnen, Brock Lesnar, and more WWE related names की वजह से मैं अंदर आया. फिर जब मुझे sport के बारे में पता लगा and I kept finding out more and more about it, I realized, man, sport is everything. और obviously बहुत cliched बात है लूमी कि हम कहें, sport is everything, it means everything to us. But I mean not just everything to me or you. I mean it's everything, period. This sport is life. It teaches you about what it means to be a human. एक इंसान की स्टोरी आप कभी कभी एक फाइट में अनफोल्ड होते हुए देखते हो. It's about the shared humanity of not only enjoying something as crude as violence, but enjoying something as great as competition. This sport is everything. So I thought, मैंने कुछ शुरू करना है इसके बारे में. Ismail had already started a podcast. Ismail and I, हम बचपन से दोस्त हैं. मतलब literally बचपन से दोस्त हैं. I said, yeah, if you're starting something, let's start something together. And that's where we started on the mic.
1.5 months later, we met Umar Fasi Bashir, who became the background to not just on the mic, I would say a lot of things Pak MMA, most things Pak MMA. Umar Fasi Bashir has edited those trailers, those videos, everything you see from strategy, how it's done. Umar Fasi Bashir is the man. So that's just how it came together. Three-man team. We said, okay, let's do it. And abhi tak, 4 साल हो गए, abhi tak पैसों की कोई डिस्कशन नहीं होती कि कितने आ रहे, कितने जा रहे, क्या हो रहा है. अभी तक कोई ये नहीं होता कि ब्रो हम इससे क्या फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि ऑनेस्टली इतना फायदा नहीं हो रहा. हम ये चीजें नहीं सोचते. हम लोग कहते हैं यार जो हम बाहर मतलब डाल सकते हैं इन द एथर, जो हम कर सकते हैं हम करेंगे. उससे हमें को फायदा अपने लिए नजर आता है पता नहीं, लेकिन जो सीधी बात है लोमी, लॉन्ग, ये तो लॉन्ग स्टोरी है ना. जो शॉर्ट स्टोरी है, इफ देयर इज अ स्टोरी दैट इंटरेस्ट अस, वी वांट टू टेल इट. That's it. Mhm. And that is a story of a fighter. That is a story of a sport. That is a story of an entire sporting culture. It could be the story of a federation. It could be anything. If there's a story that we want to pour out and we feel like other people aren't telling them, because 4 साल पहले कोई नहीं बात कर रहा था इसके बारे में. अब मैं थोड़े थोड़े Right. पेजेस देखता हूँ, प्रो पाकिस्तानी आ गया, हमने कभी एक एमएमए की पोस्ट लगा दी, फलाना आ गया उसने एमएमए के बारे में ये कर, जुनेद अकरम ने कुछ किया है एमएमए के साथ. I see people doing it now, but 4 years ago no one was doing this. So that was the goal. No one's doing it. हम करेंगे. और हम लोगों ने किया, and that was the story, and we really, really are glad we did it, and we enjoy it to this day as much as we did when we started. Man, that's a lovely, not a story, but that's a lovely journey that you've covered, because story हर किसी की होती है, journey बहुत कम लोगों की होती है. And when you have a journey, you always have a group of people, you always go together, you walk together, and a journey is always supposed to be as such that you carry a lot of people together. अपने साथ आप लोगों को लेके चलते हो. आपकी जो story होती है आपकी अकेले की होती है, लेकिन ये journey होती है, this includes a lot of people, and that is exactly what On the Mic is about. क्योंकि On the Mic सिर्फ अपने ऊपर फोकस नहीं करता, एक फाइटर के ऊपर फोकस नहीं करता, एक रीजन के ऊपर फोकस नहीं करता, बल्कि पूरे रीजन के ऊपर फोकस करता है, पूरे एक मुल्क के ऊपर फोकस करता है, मुल्क का जितना टैलेंट है हर एक के ऊपर फोकस करता है. इट्स नॉट ओनली अबाउट मिक्स मार्शल आर्ट्स ओनली, दे कवर फुटबॉल एज वेल, और साथ ही साथ कॉम्बैट स्पोर्ट को कवर करते हैं, सिर्फ मिक्स मार्शल आर्ट भी नहीं है. तो ऑब्वियसली लाइक एज यू मेंशन्ड कि यू गाइज usually, I mean, you've never spoken about money and all. So a lot of people usually think कि यार ये लोग बस यही काम करते हैं तो बस यहीं से पैसे आते होंगे, YouTube का पैसा होगा इनके पास. So how do you manage that work? I'm sure you guys work as well. I've seen you go to work and then juggle all that life, and उसके अलावा भी जो है ना, you have more hustles that we will talk about. And so how do you manage all of that कि आप काम भी कर रहे हो, you have to do an episode as well, and then after that you get other gigs where you have to go and announce and MC. किस तरह से, क्योंकि लोग अक्सर बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता करने को, 9 to 5 काम करते हैं यार, हमारे पास एनर्जी नहीं होती. You do a 9 to 5, you run a podcast, the Pakistan only and the biggest combat sport and football podcast, and then you MC on events. How do you do that? Yeah, honestly, 4 years ago when we were starting this, तो Ismail और मैंने और उमर ने भी, obviously we had a discussion. उसका basic जो summary है वो यही थी कि free time, forget about it. Weekends है ही नहीं हमारे पास. It's like अगर आप वो चीज कर रहे हो truly जिसमें आपको मजा तो आ रहा है, ठीक है, that's one thing you enjoy. I enjoy interviewing people. I enjoy being interviewed in this case. It's a lot of fun so far. I enjoy hosting gigs. I enjoy anything and everything MMA and music related. These are things I care about. मजा आ रहा है, but उसके अलावा एक different level of fulfillment भी है साथ साथ कि यार अच्छा हम enjoy कर रहे हैं, ये सब अच्छा है, but उसके अलावा हमें एक purpose feel होता है यार कि हमारा जो ये काम है उसके पीछे कोई मकसद है और वो मकसद पूरा करने की कर रहे हैं. जब मैं इवेंट्स होस्ट कर रहा हूँ उसकी भी एक स्टोरी है. जब मैंने इवेंट्स होस्ट करना शुरू किए थे तो वो इसलिए नहीं था कि वो ये अपॉर्चुनिटी इसको पकड़ते हैं अच्छा होगा. मुझे जेन्युइनली तब चिढ़ी हुई. आई वाज एंग्री. आई वाज पिस्ड ऑफ बिकॉज I would go watch Fighting Alliance, or I would go watch these other shows, and respect to whoever was doing commentary back then, because I guess it was like a position जो कोई करना नहीं चाहता था. But it was disrespectful the way these fighters were being announced to the ring, the way they were being commentated about, the clear biases, the lack of empathy for a fighter, like calling someone the little guy. Heather King Farman, one of the best fighters in Pakistan today, uski fight thi, Fighting Alliance mein, and the commentators say it's time for the little guys. That was actually the moment I can pinpoint it. That was the moment where I was like, dude, I have to do this because this is pissing me off.
somebody needs to give these guys the respect they deserve. Somebody needs to recognize them for the athletes that they are. So with the interviews, of course, the work is work. You know what I mean? Job, वो तो करना है. 9 to 5 ho, या अभी जिस तरह I'm doing some consultancy stuff. Ismail is in Germany, studying for his master's, doing on the mic, and he has a job as well. Omar Fassi is in Cyprus, studying for his master's, has a job, and is running on the mic. I have two consultancy gigs. I do on the mic, and then weekends I have, I don't have weekends because mostly it's all filled up with gigs. It's just, we feel like हम कुछ accomplish कर रहे हैं ये सब करके, तो वो feel नहीं होता कि यार थकावट है या टाइम नहीं है या जो भी. It's just like, हाँ bro, यही करना था ना. This is what we wanted. Now we're getting to do it. So let's do it. This is actually what I tell, usually speak about to all the fighters. जितने भी पाकिस्तानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के एथलीट्स हैं उन सबको मैं ये बोलता हूँ कि यार लोग ये रोना रोते हैं कि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया. मैं ये बोलता हूँ यार किसी स्पॉन्सर या किसी के सपोर्ट का आप इंतज़ार क्यों करते हो जब तक आप खुद कल परसों जो है ना, यहाँ पे हमारे नेपाल का एक नया टीममेट आया है हु इज़ फाइटिंग वेरी सून, नेपाल्स फर्स्ट फाइटर, और उसके साथ जो है ना उसकी स्टोरी फिल्म कर रहे हैं. So that guy came in and he asked me कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, और रूम में आया, उसने देखा कि मैं लैपटॉप और कैमरा और सब, उसने कहा यार आप और क्या क्या करते हो, and he was filming. तो मैंने बताया कि obviously करना पड़ता है पेट पालने के लिए. मिक्स्ड मार्शल आर्ट इतना एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, तो इसके लिए यू कैंट ओनली रिलाई ऑन स्पॉन्सर्स. तो ये काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है. तो बंदा वो भी हैरान हो गया, कहता है यार आप लोग एज अ फाइटर आपको ये भी करना पड़ता है. तो ऑब्वियसली यही बात मैं हमेशा पुश करता रहता हूँ कि आपको हमेशा हासिल करना होगा, हमेशा ग्राइंड करना होगा. आई एम श्योर कि ऑन द माइक के यूट्यूब चैनल से इतना पैसे नहीं आए होंगे जिससे आपने जो है ना अपना इक्विपमेंट पूरा किया, जैसे अपना लुक्स सो परफेक्ट, द ग्रीन ऑन द बैक एंड ऑन द माइक द OTM साइन राइट एट द बैक एंड ऑल एवरी सिंगल थिंग दैट यू हैव इन द स्टूडियो. आई एम श्योर इट डिडंट कम बिकॉज लाइक you didn't get it from the money that you made from YouTube. And I'm not even sure कि if that is the case or not, लेकिन मैं तो एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ. तो it's always hustle mode. और मैं हर पाकिस्तानी को यही बोलता हूँ कि भाई हर एथलीट को ख़ास तौर पे कि you have to grind, you have to hustle. And इस हसल के लिए सिर्फ जो है अब हम दानियाल के हसल की अगर बात करते हैं तो अब जिस तरह ही, चलो जॉब तो अलग चीज़ होगी, उसके अलावा द पॉडकास्ट दैट ही रन्स, और साथ में जो है ना वो गिग्स पे MC करता है या अनाउंसिंग करता है. तो दानी कुड यू प्लीज टेल मी ब्रो, क्योंकि ये जो क्रिएटिव प्रोसेस होता है इसका, बिकॉज इट्स लाइक आप एक काम करते हो, आप एक कॉर्पोरेट लेट्स से सेक्टर में काम करते हो, उसकी एक थिंकिंग डिफरेंट है, उसका एक जो है ना अप्रोच डिफरेंट होता है. द मोमेंट यू स्विच ऑन टू अनदर इवेंट देन दैट अप्रोच इज डिफरेंट. सो इट्स लाइक यू आर एक्टिवेटिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन, और यू हैव टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज. सो व्हाट इज दैट क्रिएटिव प्रोसेस that or what's the inspiration, or what drives you to be creative in both these fields? So if I have to sum up where our okay, let's just if अगर सिर्फ अपनी बात करें, if I talk personally, my creative process, this is gonna sound very cliche, बहुत cheesy और typical बात लगेगी जो, but I swear if I have to sum it up तो यही है. It's all about giving respect. मुझे personally कोई और like मैं summarize करूँ अपने सारे काम को, तो it's all about just giving not just respect but due respect. Right? The हमारा podcast है, अगर you've been on a lot of times as a guest, you watch any of our episodes with guests from Pakistani MMA. ये पहली दफा है जो मैं अपने बारे में इतनी एक्सटेंसिवली कभी भी बात की हो कैमरा के सामने, because the show is not about me. It never will be. It never has been. It doesn't need to be. It's about the person in front of me. It's a blank canvas. जब हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं तो वो पूरा सफेद है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ. पॉडकास्ट खत्म होने तक मैं चाहता हूँ कि उस पूरे कैनवस के ऊपर मेरे गेस्ट की स्टोरी सामने आए, मेरे गेस्ट की मोटिवेशन सामने आए, लोगों को समझ आए कि बंदा है क्या, इसने क्या किया, बंदी है क्या, उसने क्या क्या किया हुआ. दैट्स इट. जब मैं स्टेज पे इंट्रोडक्शन दे रहा होता हूँ या मैं केज में इंट्रोडक्शन दे रहा होता हूँ, उसका भी यही मकसद है. जो मेरे सामने फाइटर है इसके बारे में शायद इतने लोगों को नहीं पता. मैं चाहता हूँ कि मेरी अनाउंसमेंट से ही वो इस बंदे को कभी ना भूलें. Because again, I'm getting to work with the best people in both music and MMA, if I'm being honest. MMA, it's the cream of the crop. It's always fighters that I'm working with. Any person who steps in the cage deserves that respect. I'm going to give them that respect. With music as well, these artists, a lot of them underground, a lot of them, are still coming up. A lot of them aren't recognized mainstream.
I'll try to add to that through my announcement. That's it. It's all about getting respect. About giving respect. Do I get respect? Not always, and that's fine. I don't care. Like personally speaking, it doesn't bother me like at all if somebody, even the person that I'm trying to put over, whether they respect me or not, it's irrelevant. I didn't start this or do, and nor do I do any of this कि मुझे कोई रिस्पेक्ट दे या मेरा नाम हो या मुझे कोई दानियाल भाई बोले मेरा हाथ में. I don't give a shit, to be honest. Like it's just about the work that I go to sleep at night. मैं कह सकूं हाँ ब्रो मैंने पूरी जान मारी है, मैं जितना कर सकता हूँ किया है. और हसल वाला लफ्ज ना बहुत ग्लोरीफाई हो गया यंगस्टर्स की वजह से कि हर एक ने हसल करना है. और बिल्कुल है, हसल करना है, बट यू कांट जस्ट कीप हसलिंग विदाउट अ पर्पस. You have to know why you're doing it. What is the thing you're trying to rectify? क्या वो चीज है दुनिया में जो आप ठीक करना चाह रहे हो, जो आपको वो मिल जाए तो I swear आपको कुछ पता नहीं लगता. टाइम का पता नहीं लगता 4 सालों. It feels like 1.5 साल पहले शुरू किया अभी भी लगे और लगे रहेंगे. So Word. yeah, it's all Word. about giving respect. True. So, I mean, you've always been very respectful to every single artist or every single athlete that I've seen you announce, and that shows in your energy. जब and I mean, हर किसी को ये बात realize करनी चाहिए कि वो respect उनको कैसे दिखनी चाहिए, कहाँ नजर आती है. That is when you're jumping on the stage or inside the cage and you're screaming at the top of your voice and announcing their name and glorifying them. और जितनी उनकी तारीफ के पुल बांधता है दानियाल नासिर मिर्जा, उससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि वो आपको कितनी रिस्पेक्ट देता है. And this is what makes us basically give respect back to Mr. DNM. And this is exactly one of the reasons why I wanted you to be, actually I wanted you to be the first episode, but since I didn't have any idea how to go about it, I was like, you know what, एक एपिसोड करता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद दूसरे में जो है ना दानियाल को बुलाऊंगा. So let's move on from there. That you spoke about the respect that you give to the fighters and to the artists. So how do you feel? What's the difference that you've faced के जो आपको artists जो respect देते हैं या athletes, especially martial artists या जो भी combat sport athletes हैं, वो आपको respect देते हैं? Has there been any significant difference या you think it's pretty much the same या इनके demeanor में क्या फर्क नजर आता है? I mean, look, I treat them की बात नहीं है. Like हमें देखना ही चाहिए एक फाइटर को, एक म्यूजिशियन को, एक फिल्म मेकर को, एक एक्टर को, इन सबको हमें एक आर्टिस्ट की लेंस से ही देखना चाहिए. लूमी, you're an artist. Memosh is an artist. Mushtaba is an artist. Same way Manu is an artist. Same way Natasha Noorani is an artist. Same way Ashir is an artist. Same way Talal Qureshi is an artist. You all are creating your art through your story, through your, where you are in your life right now, and your fights and their songs. I mean, zameen asman ka farak hai do cheezein karne mein, fight karne mein aur gaane banane mein, but at the same time, it's artistic expression at the end of the day that you guys are putting out. आप लोग अपने आप को express कर रहे हो एक medium के through. I mean, honestly speaking, it's been so overwhelming, Uloomi. Like I don't even know what to say. Because when I started this, I was 5'0", you know what I'm saying? I was, and still feel like 5'0" on a regular basis. But more than that, not a lot of people knew me. And I was satisfied with that. And I'm still satisfied with the world knowing me. If I go out sometimes and people, hey, you're that guy from the concert, they have no idea who the hell I am. A lot of people attend concerts, so they see me. That alone freaks me out. Okay, holy shit, they remember, and I get overwhelmed. So when an artist like you or any artist comes and shows respect and appreciates my work, it's so overwhelming because, like I said, 5'0", nothing. You know what I mean? It feels like this shouldn't be happening. Imposter syndrome कूट के भरा हुआ है मेरे अंदर. और in a way अच्छी बात है because honestly speaking, it's all very flattering. Like I said, मैंने कभी भी नहीं सोचा था when I started कि मुझे इससे इज्जत मिलेगी या लोग मुझे कहेंगे कि यार तू बड़ा फिट है, तू बड़ा फिट बॉय है, तू सही काम करता है. और वो that was never the goal. So now that it's happening, yeah, it's very overwhelming. It's weird. मैं कोशिश करता हूँ कि बस अपने काम पे फोकस कर, मिस करा ये ना सुन ये, और मैं नहीं सुनता. मैं हर इवेंट से पहले उसी तरह तैयारी कर रहा होता हूँ. एक फाइट नाइट के लिए सारी शीटें बना के सब वही कर रहा होता हूँ. कॉन्सर्ट पे जाने से पहले वही बटरफ्लाईज हो रहे होते हैं, गाने सुन रहा होता हूँ आर्टिस्ट के कि क्या बोलना है. Not, it's all love, and I love that. It's all love. So now that you've mentioned about the respect and the कि मैंने कभी सोचा नहीं था,
this is basically where I wanted to step in and say, for all those people जो कि ये देख रहे हैं कि एक बंदा खामोश है और सिर्फ एक बंदा बोल रहा है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग एक सस्ते प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं ये रिकॉर्ड करने के लिए, जिसकी वजह से जब एक बंदा बोलता है तो दूसरे को खामोश रहना पड़ता है। तो वरना मैं चाहता हूँ कि हर बात के बीच में कोई ना कोई कमेंट दूँ। तो you'll have to bear with us जब तक थोड़े बहुत हमारे पास इतने पैसे नहीं आते कि हम कोई प्लेटफॉर्म का जो है ना सब्सक्रिप्शन ले लें और उसके ऊपर बेहतरीन सा आप लोगों के लिए पॉडकास्ट कर सकें। But since you mentioned all of this, all of the I mean, I do not agree with you when you said कि जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा है and this and that, because you deserve it. You've worked so much, you've worked so hard, you have brought a lot of stories in front of the world, a lot of untold stories in front of the world जो कि दुनिया में कोई नहीं करता, कोई नहीं बताता। You have brought कितना चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, लेकिन चढ़ते सूरज की पहचान पहुंचाना, उस सूरज को चढ़ाना, उसकी एक पहचान बनाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है जो कि ऑन द माइक वाले करते हैं। सो अ ह्यूज शाउट आउट टू ऑन द माइक, एंड इफ यू गाइस हैव नॉट सब्सक्राइब्ड and follow them on Instagram and Facebook and YouTube, just do it right now. Pause this video, head over to their socials and follow them right now. Khair, so coming back to the point, when you do all of that, I just wanted to take you back and rewind, flashback, क्योंकि मुझे एकदम से एक चीज़ याद आ गई कि